Okay. So in last class, we have already learned that Lagrangian must be function of generalized coordinate, generalized velocity, and time. This is all about kinetic energy minus potential energy, isn't it? And from here, we can have equation of motion, and this equation of motion d upon dt del L upon del x dot minus del L upon del x is equal to 0. जैसे आप कर सकते हो, सपोज मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर लेता हूं, सिंपलेस्ट सिस्टम. सो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? हाफ m x डॉट स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दैट विल बी हाफ kx स्क्वायर. So what is your Lagrangian? Your Lagrangian is half m x dot square minus half kx square. Just you can try to solve it. So del L upon del x dot is what? mx dot. Del L upon del x is what? Minus kx. Now let's go for this. यहाँ पर put कीजिए इसे. You have d upon dt. Del L upon del x dot is mx dot minus kx must be equal to 0. What is this value? mx double dot plus kx is equal to 0. क्यों नहीं आ रहा है? हाँ? Are you getting this thing? Yes, sir. तो simple, हर एक जगह पर आएगा. Don't worry, everywhere. Now it's okay that we can easily get what will be my Lagrangian equation of motion. Now we will discuss generalized momentum. Okay, generalized momentum and cyclic coordinate. And cyclic coordinate. Okay. So if qi is generalized coordinate, then pi is identified as generalized momentum, and the value of pi is defined as del L upon del qi dot. क्या है ये जनरलाइज मोमेंटम? क्या है? del L upon del qi dot, where qi dot is what? Generalized velocity. So this is basically generalized momentum. Why we are using the word generalized momentum? Because generalized momentum may be linear momentum, it may be angular momentum, depends on your situation. What is your generalized coordinate? If your generalized coordinate is linear, then obviously you have linear momentum. If your generalized coordinate is angular, suppose you are taking the theta as your generalized coordinate, then obviously you have your angular momentum as your generalized momentum. So here we are using a single word, that is what? Generalized momentum. Now let us try to go for our next thing, that is what? Cyclic coordinate. किसके बारे में बात कर रहा है? Cyclic coordinate. Now, a Lagrangian is function of generalized coordinate, generalized velocity, and time. Chalo. If Lagrangian is not explicit function of any particular generalized coordinate, let's say that coordinate is qk. If Lagrangian is not explicit function of this particular generalized coordinate. So what is mathematically, what is meaning of explicit function? Mathematically it means del L upon del qk must be equal to 0. Del L upon del qk must be equal to 0. But del L upon del qk dot is equal to not 0. Okay? Are you getting my point?
ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जहां पर कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट या दो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट आपके ये लैग्रेंजियन क्यूके के रेस्पेक्ट में अगर आप पार्शियली डेरिवेटिव ले रहे हो तो दैट विल बी जीरो, बट अगर आप इसके वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो देन दैट विल बी नॉट जीरो, देन क्यूके इज आइडेंटिफाइड एज व्हाट, cyclic coordinate. So now what will happen when qk is cyclic coordinate? Then what will be momentum correspond to qk? Del L upon del qk dot is equal to, let's say this is your pk, this is your momentum, and when we will use equation of motion, and I have to write here q dot, okay, x galat likh diya, q dot. So if we are writing this equation of motion as d upon dt del L upon del qk dot minus del L upon del qk, that must be equal to 0. So what is del L upon del qk? 0, because it is cyclic coordinate. So then what will happen? D upon dt del L upon del qk dot, what is del qk dot? Is nothing but what? pk, and this must be equal to 0, which implies pk is constant. So now what is conclusion? The conclusion is very interesting, that if you have any cyclic coordinate, suppose qk is cyclic coordinate, then it's the momentum conjugate to this qk is constant of motion, and you can easily discuss conservation of momentum or conservation of angular momentum depends on what is your cyclic coordinate. So it's a wonderful technique. It's a wonderful technique. Somehow, if you are able to write the kinetic energy and potential energy, and beautiful part is that both are the scalar function, and both are a scalar function, and if you write this thing, if you write Lagrangian with in some particular coordinate, and that particular coordinate will depends on what is symmetry and what kind of motion you are going to discuss, then what you will get? You will get equation of motion. You can find out the cyclic coordinate, and once you will find cyclic coordinate, then what will happen? You can easily discuss the conservation of momentum. You can discuss one type of symmetry in your system. This is a wonderful thing, and this is a wonderful technique. You can just try to understand. So, is that any problem up to this point? Everyone? Okay. हाँ बोलिए. सर del L by del QK dot अगर not equal to 0 है, then del L by del QK dot is PK, is generalized momentum. तो अरे यार, जब QK डॉट 0 हो जाएगा तो PK तो कुछ रहेगा नहीं, तो 0 हो जाएगा. ये क्या सवाल हुआ? नहीं, ऑलवेज यू हैव. एक मिनट, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? कुलदीप. कुलदीप जी, पहले ये समझने की कोशिश करो, अगर del L अपॉन del QK डॉट 0 हो जाएगा तो PK तो ऐसे ही 0 हो जाएगा. तो जब दोनों ही 0 हो गए तो वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, वो तो कुछ काम का ही नहीं रहा. Yes, sir. Are you getting my point? Yes, sir. So you have to put the question in a very sensible way. मैं क्वेश्चन पूछने से मना नहीं कर रहा हूं. What I am saying कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके पीछे सेंस होना चाहिए, सिर्फ मैथमेटिकली नहीं होना चाहिए. दिस इज अ बिग थिंग. ये बड़ा चीज नहीं नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. अब दोनों ही 0 हो जाएगा तो क्या है भाई, है ही नहीं, ऐसा तो हजारों चीज 0 रहेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. आपका क्वेश्चन ये हो सकता था, ये ज्यादा बेटर क्वेश्चन होता, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता कि सर ऐसा हो सकता है कि del L अपॉन del QK इज इक्वल टू 0 और del L अपॉन del QK, sorry, del L upon del QK is not equal to 0 and del L upon del QK dot is equal to 0. क्या ऐसा हो सकता है? मैं अगर आपकी जगह रहता तो मैं ये क्वेश्चन पूछता. जब दोनों ही 0 है तो क्या मतलब है? तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ट्रिवियल केस हो गया ना वो. हाँ, नहीं, अगर तो ये दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका del L अपॉन del QK इज इक्वल टू नॉट 0 और del L अपॉन del QK डॉट इज इक्वल टू 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. ये कभी भी नहीं होगा. ओके? Why sir? हाँ, क्यों बट सर, ऐसा मतलब
अरे क्यों? अरे ये बताओ, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में काइनेटिक एनर्जी रहेगी नहीं और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। हाँ, डॉट का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी, द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? फर्स्ट यू विल सी द डिग्री ऑफ फ्रीडम को कौन जस्टिफाई करेगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? Kinetic energy, kinetic energy. So number of generalized coordinate will be equal to number of degree of freedom, isn't it? So degree of freedom के बारे में बात कौन करेगा? Kinetic energy बात करेगा। Are you getting or not? Potential energy हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, constant potential भी हो सकता है, isn't it? But Yes. kinetic energy will just justify its degree of freedom. So ये कभी हो ही नहीं सकता है कि आप उस कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी का टर्म नहीं हो और उसके ऊपर फोर्स लग रहा हो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, सो ये आप ध्यान रखोगे, ओनली दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। यस सर, लैग्रेंजियन जिस भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे एक्सप्रेसिव फंक्शन नहीं होगा, वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आपका साइक्लिक बन जाएगा। यस, मैंने लिखा क्या है? ठीक। डोंट ट्राई टू वेरीफाई, ओके, ट्राई टू अप्लाई। ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस। ओके सर, अभी आगे क्वेश्चन करने दो, फिर बात करते हैं, ठीक है? लेट मी डू वन क्वेश्चन, देन आप बात करोगे, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना? क्योंकि कई चीज होती है जो आगे डिस्कस करना होता है, उसके ऊपर अननेसेसरी टाइम हम वेस्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्टली डिस्कस करके। ओके, नाउ suppose there are 3 degree of freedom, then I can write my Lagrangian as half m x dot square y dot square z dot square minus half k x square plus y square. So suppose this is my Lagrangian of a system. This is 3 degree of freedom. कितने degree of freedom है? 3 DOF. So suppose it is 3 DOF है, कैसे पता चल रहा है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 स्क्वायर टर्म है। आप देख रहे हो यहाँ पर x डॉट एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डॉट मींस वेलोसिटी है कि नहीं, y डॉट एक अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम, z डॉट एक अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो व्हेनेवर यू वांट टू सी डिग्री, वांट टू मैच डिग्री ऑफ फ्रीडम and generalized coordinate, you will see the kinetic energy part and you will see the different dot. Okay, it may be eta dot, xi dot, beta dot, it may be possible. But if there is 3 degree of freedom, then you have 3 generalized velocity must be there. But now look at the beautiful part of this particular problem. What is my generalized coordinate? My generalized coordinate is q1 is x, q2 is y, q3 is z. Now what is my generalized velocity? q1 dot is x dot, q2 dot is y dot, q3 dot is z dot. Now I have to check whether is that any cyclic coordinate. Then we have to check del L upon del X is equal to not 0 and this value is equal to minus kx, which is not equal to 0. Del L upon del Y is minus ky, which is not equal to 0. So these two are not cyclic coordinate. Now you can see del L upon del Z is equal to 0, but del L upon del Z dot is what? Mz dot, which is not equal to 0. So Z is what? Cyclic coordinate. Are you getting my point? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये यहां तक जेड तो यहां नजर ही नहीं आ रहा है, बट व्हाई आई हैव टेकन जेड एज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट? भाई जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगा तो कोऑर्डिनेट होगा, तभी तो वेलोसिटी होगा, बट इट इज नॉट अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है, उसका फोर्स पर कोई रोल नहीं है, बट मोशन में तो रोल है उसका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है।
जरूरी है कि हर डायरेक्शन में फोर्स लगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट यस, अगर आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन यू हैव 3 मोमेंटम और 3 डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। सो यहां पर आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखना होगा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, दिस मस्ट बी 0 बट दिस मस्ट नॉट बी 0. So these are cyclic coordinate. If Z is cyclic coordinate, then what will be my generalized? Then what will be conserved quantity? Is that Px will be conserved quantity? नो सर। No. Del L upon del X dot is equal to nothing but what? Mx dot, which is not conserved. Okay? Not conserved. Py is conserved quantity? No. Del L upon del Y dot is equal to My dot, not conserved. What is conserved quantity? The Pz is conserved quantity. Del L upon del Z dot is equal to Mj dot, and which must be constant of motion. Why? Because Z is cyclic coordinate. Lagrangian is not explicit function of Z, but yes, they are contributing into motion. You contribute कर रहा है motion में, isn't it? Now we have to go for equation of motion. What is our equation of motion? We have to write equation of motion d upon dt del L upon del X dot minus del L upon del X is equal to 0, and this value is mx double dot plus kx is equal to 0. D upon dt del L upon del Y dot minus del L upon del Y is equal to 0. That is m y double dot plus ky is equal to 0. You can just check it. But if you will go for the Z component equation of motion, what you will get? You will get exactly same thing, isn't it? You can just look at here. Del L upon del Z dot minus del L upon del Z is equal to 0. So del L upon del Z is 0 because it is cyclic coordinate. So you have d upon dt. What is del L upon del Z dot is equal to Pz must be 0, which implies Pz is conserved quantity. So now you can see each and everything is related. Why momentum in x direction is not conserved? Because there is force, or that is external force, and that so why it is not conserved. Why momentum in y direction is not conserved? Because there is external force into y direction, so it is not conserved. But there is not any force into z direction, so why my Lagrangian is not explicit function of z, and so why z is what? Cyclic coordinate, but Pz is always there because it have to go for the degree of freedom. And yes, there is motion into z direction, but there is not any external force into z direction. So why momentum in a z direction is conserved. Now अब सवाल पूछो, पूछिए। इससे पहले जो स्टूडेंट सवाल पूछ रहा था, अब आप पूछ सकते हो। बताओ अब कहाँ दिक्कत है? दिक्कत नहीं थी, यही पूछ रहा था मैं कि मतलब जहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है वो तो फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जिसमें फोर्स नहीं लग रहा, मतलब वही किया हमने यहाँ। दैट्स इट। ठीक है, ओके, है ना? ठीक है, आंसर मिल गया ना? यस। ओके, गुड। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस। नाउ ये तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लिया चीजों को। अब मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा होता है अगर समहाउ हम सुटेबल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू ट्रांसफॉर्म दिस Lagrangian into cylindrical coordinate system with x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and z is equal to z. सपोज ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस Lagrangian को करते हैं और फिर सारा चीज करने की कोशिश करते हैं। यस, ठीक है ना? एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज क्या होता है। देन यू विल, तो आपको एक इंट्यूशन डेवलप होगा कि यस, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। ओके,
So we are just going to change the coordinates in r, theta and z. So what will happen when we are going to change? We can find the x dot. ऐसा तो कर चुके हैं हम लोग. r dot cos theta minus r sin theta, theta dot. What is y dot? R dot sin theta plus r cos theta, theta dot. And what will be z dot? Is nothing but z dot. I can write it directly. हम लोग ये calculation पहले भी कर चुके हैं. So don't worry about this. So you can just verify, am I correct or wrong? So if this is half m r dot square r square theta dot square plus z dot square minus half k r square, this is my Lagrangian. होगा ना? Just check it. सब हम लोग पहले कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही. Yes? Now you can see what is generalized coordinate here. कहां से दिखाई देगा आपको generalized coordinate? वेलोसिटी को देखोगे, वेलोसिटी को देखोगे. यस, पहले आप जनरलाइज वेलोसिटी देखो. दिस इज फॉर द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो देयर मस्ट बी 3 जनरलाइज वेलोसिटी. वो डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको, वो डायरेक्ट दिखेगा आपको. सो व्हाट इज योर वेलोसिटी हियर? सो q1 डॉट क्या है? r डॉट. q2 डॉट क्या है? थीटा डॉट. r थीटा डॉट इज नॉट जनरलाइज वेलोसिटी, थीटा डॉट इज जनरलाइज वेलोसिटी. ओके, एंड q3 डॉट इज व्हाट? Z dot. So q1 is equal to r, q2 is equal to theta, and q3 is equal to z. So we have 3 generalized coordinates, r, theta and z. Now, is that r is cyclic coordinate? Del L upon del r, and this value is mr theta dot square minus kr. Is that it is cyclic coordinate? No, it is not No, cyclic coordinate. Is that theta is cyclic coordinate? Del L upon del theta is equal to 0. You can check, isn't it? So yes, theta is cyclic coordinate. So if theta is cyclic coordinate, then which quantity is conserved? Del L upon del theta dot. इसे मैं क्या कह सकता हूँ? P theta dot, P theta. And what is your P theta? Del L upon del theta dot. अगर आप यहाँ पर differentiate करोगे, then you will get, I think, mr square theta dot. सही लिखा हूं ना? And Yes, if and mr square theta dot is क्या है ये देखकर हमें अब हमें एनालाइज करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस थिंग? क्या है ये? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? Angular momentum. Angular momentum. Excellent. So this is nothing but angular momentum. mr square is moment of inertia kind of thing. Theta dot is the velocity. So this is some angular momentum. और किस डायरेक्शन का angular momentum है ये? Lz है ना? If something is rotating in xy plane, so there is angular momentum in z direction, and so you can easily see that angular momentum in z direction is actually conserved. And now you can see next is that z is also cyclic coordinate? Yes, z Yes, is sir. also cyclic coordinate, and you have del L upon del z dot is equal to pz, and that value is m z dot, and which is also conserved. This is also constant. This is also constant. So now you can see. Here, if we have transformed our coordinate system in a very nice way, then we can reveal more and more symmetry. ये symmetry तो हमें Cartesian coordinate में भी मिल रहा था, isn't it? But ये symmetry हम कहीं न कहीं miss कर रहे थे Cartesian coordinate में. Directly हमें नहीं मिल रहा था. Are you getting my point? Yes, sir. But here you have are directly getting this particular symmetry. And now your z direction linear momentum as well as z direction angular momentum both are conserved. ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? Conserve हो रहे हैं. And now you can write your equation of motion, that is d upon dt del L upon del r dot minus del L upon del r must be equal to what? 0. So हम यहाँ पर लिखते हैं, then what will happen? I think mr double dot minus mr theta dot square plus kr must be equal to 0. Obviously,
R is not cyclic coordinate. So there is external force in direction of R and you have equation of motion in a direction of R. Clear है? क्या थीटा और जेड में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की जरूरत है? नहीं, लिख करके भी क्या आएगा? फिर से फाइनली यही आएगा, बिकॉज पी थीटा एंड पी जेड इज व्हाट? कंजर्व क्वांटिटी. सो देयर इज नॉट एनी फोर्स और टॉर्क इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है? एनी डाउट? एवरीवन इज कंफर्टेबल? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको डेफिनेशन क्लियर करना है. ठीक है? ओके. सो ये तो हमने डेफिनेशन क्लियर कर लिया है ना. जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी क्या है, जनरलाइज मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, मेनली एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ लैग्रेंजियन. ओके, इसके लिए हमें हैमिल्टोनियन सीखना होगा. दैट इज डिफरेंट इशू. सो क्यों ना अब हम लोग डिफरेंट टाइप के सिस्टम का लैग्रेंजियन देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, और क्या क्या कंजर्व होता है, वो सारी चीजें करने की कोशिश करें. आर यू पीपल रेडी? यस सर. यस सर. है ना? अपना बेल्ट टाइट करके बांध लो. ठीक है? सो वी विल टेक अ फ्लाइट. ओके. जस्ट इंजॉय, है ना? बहुत मजा आएगा. और आप वैसे वैसे चीज देखोगे जिसको कि आप न्यूटोनियन से करते तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है. हो जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होगा, बट इट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग. ओके, चलो. सो लेट्स गो फॉर माय वन ऑफ द फर्स्ट फेवरेट क्वेश्चन. ठीक है? एंड दिस इज व्हाट अ पार्टिकल is moving, a particle of mass m is moving on a ball, BOWL, ball समझते हो ना? something kind, this kind of thing, है ना? जिसमें सूप पीते हैं, something है, उसका छोटा रूप है. yes, कटोरी. very good, कटोरी. so this is your ball and this is given. The ball have equation half b x square plus y square. इस बॉल का इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल टू हाफ बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड ऑब्वियसली द ग्रेविटी इज इन z डायरेक्शन. ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? ऑब्वियसली इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो ग्रेविटी विल ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द लैग्रेंजियन. तो वी हैव टू राइट द लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम. Lagrangian of system in cylindrical coordinate. किसमें लिखना है? cylindrical coordinate. So this is nothing mathematically, this is equation of paraboloid. किसका इक्वेशन है ये? पैराबोलाइड. पैराबोलाइड क्या होता है? पैराबोला को लेकर रोटेट कर दिया. ठीक है? सो जेड एक्सिस के अबाउट पैराबोला को रोटेट करोगे तो वाई में भी पैराबोला हो जाएगा. सो दिस इज सम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. दिस इज ऑल अबाउट पैराबोलाइड. ओके, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर जेड एंड दिस इज योर पैराबोलाइड. हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम? टेक्निक क्या है सॉल्व करने का, वो देखो. नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑरिजिन चूज करोगे. एंड यू हैव टू चूज योर ऑरिजिन वेरी इंटेलिजेंटली. यहां बताओ ऑरिजिन कहां चूज करें? ऑब्वियसली दिस पॉइंट, इजंट इट? ये हमारा ऑरिजिन होना चाहिए. एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट कीप योर पार्टिकल फ्री. आप अपने पार्टिकल को पहले फ्री कर दो. सो अगर आप उसे फ्री करोगे तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स, वाई एंड जेड. यस. सो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है या फिर 2 डायमेंशनल सिस्टम है? 3 डायमेंशनल सिस्टम है. ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है. सो इफ इट इज 3 डायमेंशनल सिस्टम, देन व्हाट विल हैपन? हाफ m x dot square plus y dot square plus z dot square. So this is your kinetic energy. What will be your potential energy?
I will assume this is my zero potential. So this will be higher potential and this will be lower potential. So I can write my potential energy is nothing but what? mgz. This is my potential energy. Now I can write half m x dot square plus y dot square plus z dot square minus mgz. Now अब हमें लैग्रेंजियन किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने के लिए बोला गया है? Cylindrical coordinate system. So we can just transform the coordinate, and that will be half m r dot square theta dot square plus z dot square, and this will be minus mg z, है ना? mg z. Now क्या मैं इसे लैग्रेंजियन कह दूं? क्या मैं इसे लैग्रेंजियन कह दूं? Should I write it Lagrangian? Tell me, कोई भी बोलो, क्या मैं इसे Sir. लैग्रेंजियन कह दूं? Anyone? Yes, sir. कह दूं? Yes, sir. Why not? Why Sir, not? They are constant by the equation of Z. Yes, you have to first calculate degree of freedom. क्या आपने मैच किया? यहाँ पर आपने कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले रखा है? 3. 3. क्या आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया? No. No, So there is one equation of constraint, relationship between dynamical variable, isn't it? Relationship between dynamical variable. So what will be degree of freedom here? 3 into 1 minus 1. So there is 2 degree of freedom. 2. 2 DOF. My goodness, there is 2 degree of freedom. And you are taking how many dynamical variable? 3. 3 dynamical variable. Not So possible. obviously this is not a correct Lagrangian. Are you getting my point? समझ रहे Yes, हो? sir. है ना? Yes, sir. So this is not a Lagrangian. This is not correct Lagrangian because you doesn't introduce this story. ये कैसे पता चल रहा है कि बॉल पर जा रहा है? Yes, this is just a particle in a gravitational field. That's it. But where is configuration? Configuration कहाँ है? So you have to introduce equation of constraint into your calculation. Very good answer given by one girl. Yes, but yes, this is written in a Cartesian coordinate. The catch is there that we have to write in a cylindrical coordinate, and that will be half b r square is my z. Now we have to write z is equal to half b r square. Then we have to also write z dot is equal to half b r dot. Clear है ये? है ना? So what will be my Lagrangian? My Lagrangian is half m r dot square theta dot square r square. Sorry, and z dot के जगह पर क्या लिख दे? Sorry, 2 भी नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, है ना? So this value is equal to b square r dot square minus mg b by 2 r square. If you want, you can take this Lagrangian half m 1 plus b square r dot square plus half m r square theta dot square minus mg b by 2 r square. Okay, so this is my Lagrangian. Now how many degree of freedom we have? 2 degree of freedom. And how many generalized coordinate we have? 2 generalized coordinate. One is r, another is theta. Because z is dependent on theta और r is dependent on z. कोई person ऐसा भी चाहता है कि r को ही replace कर दे तो z में सारा लिखेगा. But this, I think this look little bit much beautiful, है ना? So हमने r के term में लिखा है. So rn theta is my generalized coordinate. And yes, this Lagrangian is matching the number of, in this Lagrangian, the number of generalized coordinate is matching with the number of degree of freedom. So yes, you are in a correct path. Now, is that any cyclic coordinate?
Is that any cyclic coordinate? सर सेट Z कहां से आ गया? Z is not cyclic. समझ गए लगेगा पिटाई तेज. What is generalized coordinate here? R dot theta. R dot, R and theta. R and theta. R and theta. Sorry. R dot theta dot. R dot and theta dot are generalized velocity. What is generalized coordinate? R and theta. So अब यही दोनों में से कोई cyclic coordinate होगा या नहीं होगा? Are you getting my point? Yes. Yes, Yes. sir. Is that R is cyclic coordinate? Just check it. Del L upon del R. इसकी वैल्यू क्या आएगा? You have M B square R dot square plus M R theta dot square minus mg br, which is not equal to 0. So this is not a cyclic coordinate. क्या cyclic coordinate है? No, this is not a cyclic coordinate. So is that R is that theta is cyclic coordinate? Just check it. Just check it. क्या हो रहा है? Del L upon del theta की वैल्यू क्या हो रही है? 0. So which quantity is conserved? So del L upon del theta dot is equal to p theta, and this value is equal to m r square theta dot is conserved. What is m r square theta dot? Angular momentum. किस डायरेक्शन में? Z cap के डायरेक्शन में, जेट कैप है ना? So angular momentum of a system is what? Conserved. And now, and is that radial momentum is conserved? Is that linear momentum is conserved? No, linear momentum is not conserved. What is conserved? That angular momentum of a system. Obviously, angular momentum in Z direction is conserved. So now I am giving you homework. Just try to write equation of motion. Equation of motion क्या होगा? Just submit it. मैं आपसे कुछ गलती करवाना चाह रहा हूं इसलिए दे रहा हूं, है ना? So that you have to just calculate d upon dt del L upon del R dot minus del L upon del R must be equal to 0. Just do it. ये calculation करने की कोशिश करो and post it. This is your homework. Okay? Clear है? Okay? Good. Let's go for next problem. Next problem में चलें क्या? यहाँ तक clear है? ये मैं कर दूंगा, next class में कर दूंगा, but मैं चाहता हूँ कि एक बार आप try करो. Okay? Okay, चलो. बताइए. Sir, can we do the problem with spherical polar coordinate? You can do it in a spherical polar coordinate. Yes, why not? But that will be little bit more clumsy. आप करके एक बार देखो. Yes. Okay, sir. है ना? You can do it in any coordinate system. Don't worry. Mathematically, you can do it in any coordinate system. But thing is that we have to see some symmetry. We have to see some physics. Isn't it? So आप किसी भी कोऑर्डिनेट में, लेकिन जब आप स्फेरिकल में करने जाओगे तो आप देखोगे कितना पजलिंग हो जा रहा है चीजें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार्टेशियन में करोगे तो और भी ज्यादा पजल हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं कुछ सिमेट्री पता चलेगी, नहीं कुछ भी पता चलेगा. समझ रहे हो मेरी बात? ओके. So let's go for a next problem, that is particle on in inner surface of cone. Particle on inner surface of cone. So this is your cone. Okay. And here is my particle, and this angle is alpha. So this is x, y, z. So you have to write the Lagrangian. है ना? Obviously, this is your z axis. This is g is there. So you have to write the Lagrangian in a spherical polar coordinate. Write down
Lagrangian in spherical polar coordinate. किसमें सॉल्व करना है आपको इसको? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में. ओके, सो फर्स्ट क्या करना है ये बताइए. फर्स्ट ऑरिजिन. वेरी गुड. सो दिस विल बी ऑरिजिन. बेस्ट पॉइंट है ना. यहां से चीजें सिमेट्रिक दिख रही है. चीजों को किसी न किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाना आसान होगा. सो वी विल जस्ट गो फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट. ओके, सो फर्स्ट क्या लिख दे? काइनेटिक एनर्जी. ये 3 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन? 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन. सो ऑब्वियसली 3 डायमेंशन में अगर फ्री रहता तो क्या लिखती है? यही तो लिखते. x डॉट स्क्वायर, y डॉट स्क्वायर, z डॉट स्क्वायर. व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी? mg/z. नाउ अगर आप इसे ऐसा लिखो, प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस mgz. नाउ you have to convert it into spherical polar coordinate. डायरेक्ट लिख दूं क्या? Yes, sir. हाफ m. ये सब कर चुके हैं हम लोग. r डॉट स्क्वायर, r स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर, r स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, फाई डॉट स्क्वायर माइनस mgr cos थीटा. सही लिखा है ना? क्या क्या पुट कर दिया हमने? x की वैल्यू क्या पुट किया? r साइन थीटा cos फाई. y इज इक्वल टू व्हाट? r साइन थीटा साइन फाई. आप अपनी सेकंड क्लास देख लीजिएगा. z इज इक्वल टू व्हाट? r cos थीटा. ठीक है, सो z की जगह आप लिख दिया ये. नाउ इज दैट इट इज करेक्ट लैग्रेंजियन? नो सर. नो. व्हाई नॉट? बिकॉज सर हम लोग कांस्टेंट नहीं लिए. यस, हम लोगों ने ये तो कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कि पार्टिकल कौन पर घूम रहा है. सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? आप यहां से भी चेक कर सकते हो. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? बाय द वे, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट? द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट. याद है? ऐसा कर चुके हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को, है ना? सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा कहां इंट्रोड्यूस किया है? एंड ऑब्वियसली व्हाट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम? योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली 3 into 1 minus 1 is 2. And how many dynamical variable you are taking here? 3. So this is not correct. Correct कब होगा? When we will put theta is equal to alpha and theta dot is equal to 0. देखो theta dot 0 जैसे ही हो गया, उसमें कोई भी मोशन नहीं हो पा रहा है. Isn't it? Yes sir. है ना? So L is equal to half m r dot square r square sin square alpha phi dot square minus mg r cos alpha. ये हो रहा है ना? Now what is your generalized coordinate here? क्या generalized coordinate है? R और phi. 1, 2. तो क्या क्या है? क्या क्या है? R and L. R and phi. R and phi. R and theta नहीं है, R and phi. Okay. So now is that R is cyclic coordinate? Is that R is cyclic No, coordinate? sir. No. No. mr sin square alpha phi dot square minus mg cos alpha is equal to what? Is equal to not 0. है ना? ये 0 नहीं है. Is that phi cyclic coordinate? Yes, sir. Yes, sir. Yes, phi is Yes, cyclic coordinate. So del L upon del phi dot की वैल्यू क्या आ रही है? m r square sin square alpha phi dot, and this is nothing but what? p phi, and which is constant. ये क्या बता रहा है? एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम? देखो डायमेंशन देखो. एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा फाई डॉट, क्या है ये? लीनियर और एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम Momentum. है ना? दिस इज एंगुलर मोमेंटम. किस डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम है? Phi direction. फाई डायरेक्शन. दैट इज जेड कैप डायरेक्शन, इजंट इट? Yes sir. That is what? Z cap direction का angular momentum है. Now we can, so angular momentum is conserved. Okay. And now
we will go for equation of motion d upon dt del L upon del R dot minus del L upon del R must be equal to 0. So what will happen? M R double dot यहां से R dot एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे M R double dot minus M R sin square alpha phi dot square plus mg cos alpha is equal to 0. So this is your equation of motion. ये क्या बतला रहा है? इक्वेशन ऑफ मोशन को बता रहा है. एंड लुक एट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको एनालाइज करेंगे. बट बिफोर दैट आई एम गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन. लेट अस गो फॉर दिस वन. इसको जरा देखने की कोशिश करो. सो क्या हो रहा है जरा देखें. फाई डॉट की वैल्यू सम कांस्टेंट बाई एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो रहा है ना. जस्ट चेक इट. हाँ या ना. यस सर, यस हो सर. रहा है. अब r क्या है? r is this distance. Remember we are working in a spherical polar coordinate. Yes या no? Yes. अब r अगर बड़ा होगा तो phi dot छोटा होगा या बड़ा होगा? If r is big then phi dot is small. Small. If r is small then phi dot is big. Isn't it? So what will happen? The particle will rotate slowly, and as it will go towards origin, it will be faster, faster, faster and faster. Isn't it? Yes sir. So क्या ये origin तक पहुंच जाएगा? नहीं, तो ऑरिजिन तक पहुंचते पहुंचते उसका इन्फिनिट हो जाएगा. तो क्या पहुंचेगा? Now नहीं पहुंचेगा. नहीं हाँ, पहुंचेगा, वो नहीं होगा पहुंचेगा. तो वेरी गुड. आएगा, तो क्या infinite होगा? हो तो जाएगा. क्या होगा? पार्टिकल आएगा, आएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, एंड अगेन इट विल गो अप, एंड अगेन इट विल गो डाउन, एंड अगेन इट विल गो अप. अब मेरा आपसे सवाल है, माय क्वेश्चन इज दैट व्हेन इट विल गो डाउन एंड व्हेन इट विल गो अप, कौन इसे ऊपर ले जाएगा और कौन इसे नीचे ले जाने की कोशिश करेगा? बिकॉज देयर इज टू फोर्सेस, तभी तो ऊपर नीचे होता रहेगा. इजंट इट? कोई इसको ऊपर ले जाना चाहेगा और कोई उसको नीचे ले जाना चाहेगा. देन व्हाट वाज दैट टू फोर्सेस? ग्रेविटी Just- नीचे लगा. Obviously gravity इसको नीचे ले जाएगा. वेरी गुड. सो जस्ट गो एंड एनालाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. इस इक्वेशन को एनालाइज करो. आई विल डिस्कस इनटू नेक्स्ट क्लास. ठीक है? Yes.